Good afternoon, children. Let us come to our class. Last class we finished lesson number 3, that is Devadaki Manauti. I think all of you know about it. It is clear for you, isn't it? Then after that we discussed question meanings. We already finished meanings and we discussed question answers also, isn't it? So now let us go through our grammar part. Now we are discussing grammar part. We already finished Kisne Kisse Kaha. Okay, so you have to read lesson and find out Kisne Kisse Kaha. Who told this sentence to whom? That you will get from the lesson, that answer. Okay, next one is Ujjida Shabd se Khalistan Meriye. So here some words are given and sentence also given. So जब मैं राजा बनूंगा तो इस डैश को हटा दूंगा. So which is the correct word for word? To know that we want to read our lesson. Okay, so we want to read our lesson. For किसने किससे कहा also we have to read lesson then find out. So by this type of grammar part given here, it is for developing your reading ability. Okay, your reading habit or reading ability. To develop your reading ability, it is given. Okay, you have to read lesson again and again and find out answer. For finding this answer, we will read lesson again and again. So जब मैं राजा बनूंगा तो इस डैश को हटा दूंगा. We will get this one by reading lesson. See, राजकुमार thought that. कണ്ടो. See, मैं जब राजा बनूंगा तो इस प्रथा. See, here it is the word प्रथा. So we got the answer that pratha. Pratha is the correct answer. Clear? So like that you read lesson and find out these answers. Okay. The next one is language skills. Thinking skills also we discussed. समय और अवसर मिलने पर we can do many things. If we get we want to do, we must do if we are getting a chance or time for doing something new or something good. That already we discussed. Now next is grammar part, language skills, Bhasha Kaushal. First one is Viloma Shabda, that you want to find out. Viloma Shabda I already given you. Viloma Shabda Dharma Atharma. Then Himsa Ahimsa. Chut Sach. Nikad means near. So nikad opposite. What is nikad opposite? Dur. Okay. Then Devata means Devata opposite Danav. Raja rank. Raja means king, opposite rank. Paba, we already studied Paba, Punya. Mrityu, then Mrityu, Janma. Mrityu, death, Janma, birth. So that is Viloma Shabda. The next one is ki aur ki ka prayoga. Listen, ki aur की का प्रयोग. सो हियर इट इज़ गिवन की और की का प्रयोग. की एक अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक के रूप में प्रयुक्त होता है. इट इज़ यूजिंग फॉर adding two sentences together. Two sentences together. When we are joining two sentences, we are using this type of key. That is ikki matra wale key. That is ikki matra wale key. Then this is ई की मात्रा वाले की. So की संबंध कारक है. So we will study कारक നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. That is कारक से, में, पर, का, के लिए, ने. So it is we will study later. Okay, so की संबंध कारक है. यह दो संज्ञाओं या सर्वनाम के साथ लगता है. सो दिस ई की मात्रा की दो संज्ञाओं या सर्वनाम के साथ लगता है. संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगता है. राम की, उसकी. लाइक दैट वी आर यूजिंग ई की मात्रा वाले की. बट इक्की मात्रा वाले की वी आर यूजिंग टू join to sentence, or you are using to say others quotes or words. सो करना क्रिया की समाप्ति पर भी की का प्रयोग होता है. तुमने सही बात की. और करना क्रिया की समाप्ति पर. करना क्रिया मीन्स क्रिया वी स्टडीड. करना क्रिया मीन्स എന്താണ്? करना that work, when a work is doing done, it is finished, then also we will say की.
उसने वह काम की means he finished that work. Like that also we are using. So you have to find out this की और की का प्रयोग. We want to find out here. Use it here. यह बात इस ढंग से करनी होगी कि लोगों को कष्ट न हो. ले की, that is this, we are joining these two sentences. Then उनकी धारणा दी कि उस बरगद के पेड़ पर देवता का वास है. They thought that. കണ്ടോ, that എന്നുള്ള യൂസേജിന് we are using this key. Then ലോഗ് ബക്കര ബേഡ് ആദി കാട്ടുകർ ദേവത. കണ്ടോ, അവിടെ ദേവത എന്നുള്ള സംജ്ഞയാണ്. So we are using की पूजा करते थे. देवता की पूजा करते थे. और राजकुमार ने उसी तरह पूजा की जिस तरह लोग कर रहे थे. അല്ലേ, ഇവിടെ പൂജ की ദാറ്റ് ഈസ് കർണേ ക്രിയ का പ്രയോഗമാണ്. അല്ലേ, രാജകുമാർ ഉസി തര പൂജ की മീൻസ് ഉസ്നെ പൂജ की പറഞ്ഞാൽ പൂജ ചെയ്തു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ യൂസിങ് പൂജ की. ദെൻ രാജാ की मृत्यु. രാജാ की मृत्यु मीन्स हियर संज्ञा. राजा की मृत्यु होने पर राजकुमार ही राजा हुए. ले. The next one is रंगीन सर्वनाम किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुए हैं. Here सर्वनाम we studied सर्वनाम during the vacation classes. ले. So वह, उन्होंने, उनकी. ले. This one to use colored words are used for which noun. किसके लिए, ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് we want to find out. वह छोटी उम्र में नाना विद्याओं को सीखकर विद्वान हो गया. उसके किसके बारे में कहा, राजकुमार के बारे में कहा. ले. रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत से लोग. ले, रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत से लोग. कौन देखा, दैट इज आल्सो राजकुमार. उनकी धारणा दी कि बरगद के पेड़ पर एक देवता का वास है. ആരുടെ ചിന്തയായിരുന്നു, ദേവതാ കാ വാസ് ഹേ, ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗോം കി. അല്ലേ, സോ ദിസ് വൺ ആൾസോ വൈൽ വി റീഡ് ലെസൺ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് पूजा करके उनसे आदमी जो चाहता है वही पाता है. पूजा करके उनसे आदमी जो चाहता है. पूजा करके उनसे आदमी जो चाहता है. आदमी जो चाहता है उनसे, किससे, किससे, दैट इज देवता से. ले. देन मैंने देवता के निकट मनौती की थी. I also prayed God. Who told that मैंने, that is Rajakumar. So you have to read lesson, then only you will get these type of answers. Okay, next one क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए. which is क्रिया शब्द. we want to underline क्रिया शब्द. ले. जब मैं राजा बनूंगा इस प्रथा को हटा दूंगा. ले. ഏതാണ് ക്രിയ, we want to underline that क्रिया शब्द. क्रिया means what, एक काम का होना या करने का प्रयोग. ले. काम का होना या करना. we studied in vacation classes, do you remember? that is why we revised this type of grammar there. ले. so we know that करने या होने, काम करना या होना. ले. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നടന്നത്, that is. the next is दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए. correct the given sentence. This one also you read lesson and correct it. Okay, this sentence is from your lesson. वृक्ष के नीचे उन्होंने मनौती किया था. What is the wrong word here? So you have to correct it. So while giving this type of grammar part, all things you have to find out from our lesson. So you read lesson again and again, then find out answer. For each one we want to read lesson. So we will be very close with our lesson and we can develop our reading ability. That is why this type of exercise are given here. Okay, so all of you do it properly. Okay children, okay.